एक्चुअली ये स्कल जो है ये पहला एक कश्मीर में पहली बार एक इंटरनेशनल क्लब का एक एक्सटेंशन खुला है। तो चूँकि हमारे पास बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है टूरिज़्म में, जो कई बार इफ़ेक्टिव कई बार इनइफेक्टिव है, बट इंटरनेशनली एक फ़र्स्ट है एंड इट्स अ बैनर, जो एक पहला बैनर इंटरनेशनल बैनर कश्मीर में आया है एंड वी होप कि इससे इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। अगर हम अभी टूरिज्म की बात देखिए, चूँकि ये अभी स्काल का इट इज़ द फर्स्ट डे, तो जो जहाँ तक टूरिज़्म का फुटफॉल का सवाल है, टूरिज़्म कश्मीर में इट इज़ डेड एज ऑफ नाउ। एक हल्का फुल्का एक बजटेरी चल रहा है, वो भी ठीक है, बट टूरिज़्म एंड टूरिज़्म प्लेयर्स आर ब्लीडिंग राइट। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप कश्मीर की कॉन्टेम्परेरी टूरिज़्म हिस्ट्री देखें तो जो हमें 1996 1998 से पुश किया, जबकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब एक फ़ायदा देखना न देखना, हमको अपना रोल प्ले करना है और फिर नताइज अच्छे ही निकलते हैं। मतलब इस बार हालात टूरिज़्म कम हुआ, क्या वजूहात हुए वो हम सबको पता है, बट हमको रुकना नहीं है, हमको आगे चलना है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। And our friends from the Kashmir tourism industry, ladies and gentlemen, I have to start first with an apology and a word of thanks. Apologies for having to change the timings around. Unfortunately, various pulls and pressures of scheduling was making it difficult for me to be here this evening, which leads me to the word of thanks, which is to thank particularly Mr. Mehra and his team for accommodating the change of schedule and making it possible for me to be here with all of you this afternoon. I think if you look at SKAL and you look at tourism in Kashmir, you realize that there are synergies that automatically become apparent. The word SKAL is Nordic toast. Now I won't risk pronouncing the original words, but the translation of those 4 words of the toast are good health, friendship, long life, and happiness. Now, an organization whose name comes to symbolize these 4 important things. They're not talking about monetary success, they're not talking about profit, they're not talking about any of the other things that govern our day-to-day lives. The name stems from some of the most basic things that as human beings we would want. We would want for each other that we would have good health. We would want for each other that relationships of friendship would be established. We would wish for each other that we all enjoy a long life. And we would wish that that long life includes happiness. So, when that is the foundation of the organization that is establishing its club here today, then you go further. The ethos of SKAL, business with friends, that we will do business, but it will be business among friends. I think this is an important foundation, and it again goes to the root of our ethos in Jammu and Kashmir, our ethos of being business, but also being friends. I mean, here there are so many of my friends from the tourism industry.
If you look at it, they're actually in rivalry with each other. Each one's success means another one's difficulty. But they are friends. They will sit with each other, they will dine. How can we make this aspect of our lives more responsible and more sustainable? In fact, it is no secret, I've talked about it, though we are still we are a few days away from actually formalizing it. But we are very hopeful that Jammu and Kashmir now will be in a position to develop 9 new tourism destinations with foreign multilateral funding that will be made available to us. And this is a project that will run into thousands of crores. And the foundation of this project is this sustainability. Not just it should be sustainable, but it has to be responsible. It has to involve the local population. Tourism or any industry that doesn't benefit the local industry is an industry that will not work. It will not survive. And therefore, for us, these new destinations that will be developed in a way in which it is environmentally responsible, but also sustainable and involving the local community, the local residents of those areas. Because ultimately, this is what this industry is all about. And therefore, this relationship today that is being formalized, the relationship existed earlier, but today it's being given a formal shape with the establishment of the SKAL Club here in Kashmir, is one that I believe takes us another step forward in terms of cementing a relationship between the tourism industry and the tourism players here in the valley and beyond. It allows us to promote tourism in parts of the world where otherwise we have been unable to. I'm not going to dwell on the difficult times that we've had. They're no secret to anybody. The year started with a difficulty. Unfortunately, it seems to be ending with a difficulty as well. But as has been pointed out to you, we are nothing if not, what's the word I'm looking for? Resilient. We will bounce back from this. And I think in this, friends like Mrs. Khanna, क्योंकि जब खन्ना साहब यहाँ तकरीर करने के लिए उठे थे और जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मिसेस से कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मैंने सोचा अब खन्ना साहब इसके बाद कहेंगे और मेरी बीवी ने कहा कि आप पागल हो, वहाँ जा रहे हो, which is normally the reaction. Let's be honest, which is this year has normally been the reaction. But hats off to her. ये नहीं कहा कि आप पागल हो जा रहे हो, ये कहा कि मैं भी जाऊंगी और आप मुझे पहलगाम जरूर घुमाइएगा. These are the people who make what we do more worthwhile. These are the people who give us the confidence कि ठीक है, अभी अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा हमेशा के लिए रहेगा नहीं. Tanveer quoted the Kashmiri saying, which is true. No season is permanent. आप अप्रैल में आए होते तो धूप ही धूप, ट्यूलिप्स, बहार, उसके बाद गर्मियाँ आई, फिर ऑटम आया, अब सर्दियाँ हैं. ये सर्दियाँ भी 2-3 महीने रहेंगी. मार्च अप्रैल में बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है, फिर मौसम बदलेगा. हमारा बदकिस्मती से हमारी ये हालत रहती है. अब मैं भी उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हमें इतनी जल्दी मौसम को बदलते हुए ना देखना पड़े. बाहर का मौसम तो ठीक है, अंदर का मौसम इतनी जल्दी बदलना नहीं चाहिए. बाहर आए और ये बाहर सालों साल तक रहे, ये न सिर्फ मेरी तमन्ना है, न मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरी कोशिश भी है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. अब मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ उठते ऊपर जाते हुए देखें, चढ़ाव देखें, उतराव नहीं देखने हमने. मुझे उम्मीद है कि जो स्काल के साथ कश्मीर टूरिज्म का एक रिश्ता आज फॉर्मलाइज हुआ है, इससे हमें न सिर्फ स्काल को बल्कि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को भरपूर फायदा होगा. एक बार फिर मैं मेहरा साहब आपके और आपके साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम का वक्त बदल के मुझे मौका दिया
कि आप सबके साथ में मिलूं। उम्मीद करता हूं कि ये एक नए रिश्ते की एक शानदार शुरुआत हो और इसी तरह के प्रोग्राम हमें बार बार करने को मिले। आप आए और आप Yes, we have come from Delhi. Hare Krishna and Delhi, please, Mr. Mazumdar, please come forward. Mr. Khanna Saab, please come forward. President Editor, sorry. फ्लाइट के लिए नहीं बोलना, फ्लाइट की लाइट बाइट नहीं ठीक है। In the meantime, I just like to inform the Honorable Chief Minister that we have decided to hold this meeting at Taj, being one of the finest hotels of India and premier property. And we are thankful to them for their excellent support they have extended to us. Sanjeev Mehra. I'm a national president of SKAL International India. This is SKAL. We are doing the founding today club member of SKAL International Kashmir. Is a 20th club in India, the second club in Kashmir. And since we are the world's largest tourism and hospitality organization, being in 85 countries and more than 15,000 members all over the world. And we are the number one in the world as a membership is concerned. After that is US and then Mexico and other part of the world. So moving forward, the idea is to bringing into Kashmir is we wanted the tourism to be together. We wanted the soft and the promotions towards the Kashmir. So we have all the leadership of Kashmir being a part of SKAL organization, and we love to bring all colleagues and colleagues all over the world to please do come to Kashmir. Is the safest, and I believe me, the whatever hurdles happened in the past, we want to come out from this, and we would like to ensure that जो जन्नत यहाँ पे है वो जन्नत को लोग दुनिया भर से आए और वो देखे कि ये इतने पॉजिटिव लोग, इतने हमदर्द लोग, जो लोग यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटैलिटी दी है वो हमारे देश में बहुत कम है। और मैं चाहता हूँ कि जो कश्मीरी का वेलकम है वो सारे लोग इंडिया से आके देखें। इतनी सुंदरता, इतना सुंदर दृश्य इस देश, इस स्टेट में है, वो हमको करना चाहिए। और जनाब उमर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जिनके पास पोर्टफोलियो है टूरिज्म का, उन्होंने पूरे देश में ऐसा टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं हर जगह। मैं उनसे लास्ट टाइम कलकत्ता में मिला, उसके बाद अहमदाबाद। इन्होंने पूरे देश में एक एक कोने में जाके लोगों को बोला है कि प्लीज़ डू कम टू कश्मीर, सी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, वी वांट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ कश्मीर। तो वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने बहुत कम टूरिज्म डिपार्टमेंट में देखा है कि लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर देश के हर स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे वो कर रहे हैं, अगर वो ऐसे सबको वेलकम करे तो हमारे देश में टूरिज्म को लेकर अब इतनी उन्नति होगी जो कहीं नहीं होगी। जैसे तो आपकी कोशिश क्या रही? देखिए, ये सच्चाई है कि हर्डल स्टार्ट हुए पुलावन के बाद और बहुत सारे इश्यूज हुए। उसके बाद अभी करंटली जो दिल्ली में हुआ उसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी है, बट ऐसा नहीं है। मेरे लास्ट वीक भी कुछ क्लाइंट आए हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है हिंदुस्तान में कि जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, बॉम्बे हुआ, कहीं भी हुआ पूरे देश में, लेकिन हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में एक खून ऐसा है कि हम लोग उस चीज़ को नकार करके फिर कोशिश करते हैं, कोशिश पे कोशिश करते हैं कि हम लोग दोबारा आएँ और यहाँ पे आके उसी जन्नत को दोबारा खड़ा करें, टूरिज्म को लाके। तो मैं चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि प्लीज़ डू कम टू कश्मीर, विजिट अस, and please we will welcome all of you to come to Kashmir. This is a proud moment. We are here in Kashmir, and this club number is 756, and this is the 20th club in India. As you know, SKAL International is the world's largest and oldest hospitality and travel organization in the world, present in almost 76 countries and 284 cities. And this is a proud moment having the Chief Minister Omar Abdullah Saab here, and he works like a public limited company, and even his advisor picks up the call in the first ring. Leaving the Prime Minister apart, I seen two people working like this. One is Omar Abdullah Saab for promoting tourism, and second one was the past IT Minister of Telangana, Kalvakontala Tarak Ramarao. Both I have seen
how they work in a meticulous way promoting tourism. This is what we all need and to develop tourism. Me as a deputy vice president and the finance director for SKAL International for global, and I'm going to be the president elect for 2027 and deputy and vice president for 2026. I will do my best to promote tourism here, and I wish Kashmir, and we assure full support for apart from SKAL International. I also convey my regards to Kashmiri people and brothers and sisters of SKAL International Kashmir from the Vice President Andres and the President Dennis Crafton of SKAL International and the entire executive board. Signing off here.